Students, now let us start with today's chemistry class. In this class, we are going to learn about the aluminium, its uses, और हम पढ़ेंगे आगे जाते हुए, ठीक है, जिंक और कॉपर मेटल और आयरन मेटल के बारे में. चलो स्टार्ट करते हैं. Not copper, I think, only iron. So now I'll take you to the virtual whiteboard from where we'll be starting our session. So before we start, I would like to wish everybody, happy Dhanteras and in advance, happy Diwali. So here we can see the various alloys of aluminium, likewise duralium, which is 95% aluminium, and magnesium, which both are 95% aluminium. Here, 4% is copper and 0.5% magnesium and manganese respectively. Coming to the magnesium, you have 95% aluminium and 5% magnesium. Now, uses of duralium. एक तो lightweight है, high tensile strength है. It is used for making the frames of the aircrafts, windows, doors, and other household fixtures. Now coming to the magnesium, it is used for making artificial jewelries, not artificial jewelries, machinery parts, because it is very, very tough. And cheap physical balances, even pressure cookers. Okay. And it is also used for making the internal structure of the aircraft. So it is highly, very much boot tensile strength. Coming to the alnico. Alnico is the artificial magnet, जो बहुत ही strong magnet होता है. अब magnet है तो ज़्यादातर तो ferric iron जो magnetic compounds है वही होंगे, iron, nickel और cobalt. So we can say 50% iron, 20% nickel and 10% cobalt, but it also has 20% aluminium in it. Of course, as said, alnico, it is a very, very powerful magnet. So it is used as an artificial magnet. It is 4,000 times. It can lift the weight up to 4,000 times its own weight. Okay, let me show you how this alnico looks like. So can you see here? How does the alnico looks like? Okay, here we can see that, right? So this is how the alnico looks like. Now our next topic is thermite welding. Let us see a video module on thermite welding, how thermite welding is done, and it is generally used to join the railway tracks. So let us see a video module. Thermite welding. To understand how thermite welding is carried out, let us weld two railway tracks along their ends using thermite welding. First, pour the hot molten wax between the gaps of the tracks to form a wax pattern. Then install a welding setup around the rail ends as shown. Now bring a box containing thermite mixture, which is basically a mixture of aluminium and iron oxide. The mixture also consists of a very minimal amount of igniting mixture like barium peroxide. So in our textbook, it is given barium peroxide as the igniting mixture, and then at the top of this, we also place a magnesium ribbon, like because we need a ribbon. जैसे अभी दिवाली आ रहा है तो डिबेट लगाते हैं ना हम बम के आगे, वैसा डिबेट बना के इसमें लगा दिया जाता है मैग्नीशियम का रिबन ताकि इसको जलाया जा सके. We know magnesium burns with a dazzling white flame. Place this box on top of the welding setup and then ignite the whole mixture. We see that due to fire, both the aluminium and iron oxide react with each other. As a result, aluminium, which has high affinity with oxygen, reacts with the iron oxide to form aluminium oxide and iron. This reaction is exothermic in nature. Thus, a large amount of heat gets released, and this results in the formation of superheated molten metal, which consists of molten aluminium oxide and molten iron. We see that the molten iron, being heavier, settles at the bottom, and the molten aluminium oxide, being lighter, flows on the top. After some time, the molten iron flows out of the box from the opening present at the bottom of the box,
and enters the welding setup, which consists of a cavity around the joint. The extra molten iron then moves out of the cavity and falls on the tray. Now leave the molten iron for some time to solidify around the joint. Then remove the box and trays first, and then the welding setup. We see that the solidified molten iron is formed at the joint. Note that the extra iron metal can be removed with the help of grinder. Now here we see thermite mixture. What is thermite mixture? So it is a mixture of ferric oxide and aluminium, which on heating produces aluminium oxide and iron. This iron is used for thermite welding. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में? नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग. तो कौन से दो मेटल्स आप यूज कर रहे हो? सो यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है और मैग्नीशियम स्ट्रिप फॉर इग्निशन. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट. Name the metal which is formed as the result of, which results after heating the thermite mixture. So तब जो metal form होता है वो iron है, which is used for welding, right? And the igniting mixture contains barium peroxide for the purpose of ignition. So this is one of the main uses of aluminium what we see. Other than that, जैसे मैंने बताया था आजकल aluminium के wires बनते हैं for transmission cable and all. आपकी मम्मी खाने को जब पराठा पैक करके देते हैं आपको, so she puts up in a aluminium foil to keep it warm. In the paint industry for making silver color paints, in making of explosives, bomb धमाका बनाने में काम आ जाता है ये. An extraction of gold and silver, मैंने बताया था ना, उसमें aluminium powder डालते हैं तो gold और silver जो होता है वो अलग हो जाता है. किसमें से? aqua regia में से. That is right. तो ये सारे उसके यूजेस हैं. ठीक है, अभी एक जो है इसमें एल्यूमिनियम फॉइल का जो हम इस्तेमाल करते हैं इन कीपिंग द फूड वार्म, उसका रीजन है कि एल्यूमिनियम हाईली शाइनिंग मेटल होता है, तो अंदर के सरफेस से जो इंफ्रारेड रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है और बाहर नहीं जा पाता. तो दिस इंफ्रारेड रेज आर द रेज व्हिच कॉज हीटिंग इफेक्ट. नाउ ओर्स ऑफ जिंक. द ओर्स ऑफ जिंक आर zincite ZNO, zinc blend ZNS and calamine ZnCO3. calamine आप लोगों को मालूम होगा, मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारा ZnCO3 calamine होता है, and that is used for various medical purposes. It is a good antibiotic as well. So females आप लोगों को मालूम होगा जो कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह बनाते हैं उसमें calamine होता है, right? So ZnS अगर आपको जिंक ब्लेंड मिल रहा है तो उसमें से आपको जिंक ऑक्साइड बनाना है. जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए आप क्या करोगे? उसको 800 डिग्री पे गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यस रोस्टिंग. सो यहाँ हम करेंगे रोस्टिंग. और अगर जिंक कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में क्या करेंगे? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. क्या बोलते हैं उसको? हाँ सही है, कैल्सिनेशन करेंगे. सो एंड प्रोडक्ट आपको मिल गया, देखो जिंक ऑक्साइड. और ये देखो ये दोनों एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. सो मेटलर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. तो भविष्य में तुम लोग बड़े होके ऐसा मेथड ढूंढना जिससे एयर पोल्यूशन ना हो. Now the next step is just reducing the zinc with the use of carbon. You get zinc plus carbon monoxide. Now once the zinc has been obtained, अब हम उसके अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेन्युलेटेड जिंक, जिंक जो मिलता है वो हम यहाँ पे, हाँ ऑफ कोर्स इसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये मोल्टन फॉर्म में होता है. और उस मोल्टन फॉर्म को जैसे ही पानी में डालते हैं तो उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं. And this is known as granulated zinc. I'll show you the picture. So here we can see the picture of the granulated zinc. कैसा दिख रहा है ये? हाँ सिल्वरी ब्लू कलर का मेटल है, इसका कलर देख सकते हैं ना आप. So this is what is called granulated. Now coming to the physical properties, color. Freshly cut zinc metal is grayish white in color. जैसे हम bluish देख रहे थे, grayish कह रहे, right? The in the moist air its surface rapidly tarnish to the bluish gray color. हाँ टार्निश हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ब्लूइश ग्रे कलर का बन जाएगा, राइट? एट रूम टेम्परेचर इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन और मेल्टिंग पॉइंट है 120 to 200 डिग्री सेल्सियस में. वो काफी मेलेबल और डक्टाइल बन जाता है और इट अगेन बिकम्स ब्रिटल अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस. ये वाला याद रखना है. मेल्टिंग पॉइंट 419, बॉइलिंग पॉइंट 907, डेंसिटी 7.2 है.
ठीक है, it is a good conductor of heat and electricity. Now you have chemical properties to be done that will write. And so look at the chemical properties. When zinc is heated in the oxygen, you get zinc oxide. When zinc is like treated with water, you get zinc oxide and hydrogen gas is liberated. ये हमने 9th में 8th में पढ़ा हुआ है. Zinc reacts with sulfur to form zinc sulfide. It reacts with chlorine to form zinc chloride. Now ये जो हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे 8th और 9th में, आपको याद है ना? तो zinc is treated, granulated zinc is treated with dilute HCl or dilute H2SO4. So it liberates hydrogen gas along with the formation of chloride in HCl and sulfate in zinc and H2SO4 reaction. Now, treating zinc with dilute nitric acid, you get zinc nitrate, of course, plus water and NO, nitric oxide gas. NO मिल जाएगा, which is a colorless gas. ये याद रखना है आपको. And what will happen if we take the concentrated HCl, H2SO4 and concentrated HNO3? अगर हम इनसे treat करेंगे zinc metals को, so what will be the reaction? So when we treat with concentrated HCl, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट है, बट H2SO4 में सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग गैस वाला स्मेल निकलेगा. और यहाँ पे हम देखेंगे, सो H2O प्लस NO2. NO2 का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन गैस निकलेगा. सो प्रीवियसली आप देख सकते थे, देयर वाज अ कलरलेस गैस एंड ओवर हियर इज अ रेडिश ब्राउन गैस. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस. अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है. ट्रीटिंग विद द बेस यानी NaOH के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? Sodium zincate, Na2ZnO2 plus hydrogen gas, because this is an alkali amphoteric metal. याद आ रहा है ना? और KOH के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम आपको मिल जाएगा पोटेशियम जिंकेट. सॉरी, सोडियम तो है ही नहीं, पोटेशियम जिंकेट ZnO2 plus hydrogen gas. Now, similarly, जिन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर और सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है. जैसे हमने बात किया CuSO4 प्लस Zn करेंगे तो ये Cu को रिप्लेस कर देगा ZnSO4 plus Cu. So this is also possible. Now, uses of the metal zinc. It is used for galvanization. Galvanization देखा होगा आपने, वो corrugated जो roofs होते हैं पतरे वाले, उसके ऊपर आपको ब्लूइश कलर का दिखेगा. ये तो टीन है, होना ब्लैक कलर का चाहिए, पर इस पे लगा देते हैं कोटिंग जिंक की. तो जिंक को मॉल्टन कर देते हैं और उसके अंदर इस मेटल को, आयरन को डिप करके निकालते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पे एक थिन फिल्म चढ़ जाती है जिंक की. दिस इज नोन एज galvanization of zinc, and it makes it waterproof, rust. So galvanization prevents rusting. It is also used in a dry cell. जो मेटल का जो कैपिंग होता है जिसके अंदर इसको रखते हैं, वो होता है जिंक. So zinc is used in making the shells of the dry cells. Okay. फिर it is used in the extraction of noble metals. जैसे गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है तो एल्यूमिनियम की जगह आप जिंक का भी यूज कर सकते हो as a reducing agent in copper. And then formation of alloys. ब्रास, ये आपको याद रखना है, 60% to 80% कॉपर है, 20 to 40% इसमें जिंक होगा. देन ब्रोंज, 80% कॉपर एंड 2% जिंक एंड 18% टीन. एंड जर्मन सिल्वर, जो दिखता सिल्वर जैसा है, उसमें 50% कॉपर है, 30% जिंक एंड 20% निकल है. या कंपोजिशन आपको याद रखना है. ब्रास आर्टिफैक्ट्स बनाने में काम आता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जल्दी ये ब्लैक टार्निश नहीं होता, इसलिए बहुत सारी चीजों में काम आ रहा है. देन ब्रोंज, इट इज हाईली पॉलिश्ड और काफी चमक होती है, ये भी जल्दी टार्निश नहीं होता, कॉइन, स्टैचूज और यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है. ठीक है. जर्मन सिल्वर, डेकोरेटिंग पीस. अभी जैसे दिवाली वगैरह आ रही है, सो बर्तन हमारे पास सिल्वर अगर हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वी कैन यूज जर्मन सिल्वर.